हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेआउट ऑफ सी एस एम्पलीफायर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्कीमेटिक बना लिया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने जो स्कीमेटिक यहाँ पे बनाया है इसमें मैंने कोई भी इनपुट आउटपुट नहीं दिया, सिर्फ पिन्स एसोसिएट किए, वेदर इट्स वी बी वन वी इन आउटपुट वी डी डी ग्राउंड। ठीक है। एंड वन मोर थिंग टू नोटिस हियर इज, अभी तक हमने जो भी एम्पलीफायर्स डिज़ाइन किए थे हमने लेंथ को 500 नैनोमीटर रखा था। ठीक है। एंड देन हमने साइजिंग की थी टू गेट करंट ऑफ 100 माइक्रोएम्पेयर या जितनी भी करंट चाहिए थी। इस केस में बट हम लोग क्या करें, जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है 180 नैनोमीटर की, विच इज़ 180 नैनोमीटर, हमने वही रखा है उसमें। ठीक है। सो वी हैवंट चेंज, हमने क्या, मैंने रखा है वैसे ही। ठीक है। तो उसके बाद इसकी साइजिंग करेंगे, और साइजिंग आपको पता है कैसे करते हैं। जो यहाँ पे पहली बार आ रहे हो तो लास्ट वीडियो उसको चेकआउट करना प्लेलिस्ट में। ठीक है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोग चेकआउट करना कि कैसे हम W/L की ये साइजिंग करते हैं। ठीक है, रेशियो निकालते हैं। सो फॉर दिस लेंथ W यहाँ पे 24.45 माइक्रो आ रहा है, एंड फॉर दिस एनमॉस W 10 माइक्रो। एंड ये मैंने डिजाइन किया फॉर अ करंट ऑफ 100 माइक्रो एम्पियर्स। ठीक है। जिन्होंने लास्ट वीडियोस देखा उन्हें पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, एंड जो नए हो प्लीज़ लास्ट वीडियोस को चेकआउट करना। सो आई एम टेलिंग दिस इज फॉर अ डिजाइन ऑफ 100 माइक्रो एम्पियर्स की करंट के लिए मैंने इसे डिजाइन किया है। ओके। सो दिस वैल्यूज यू गेट, एंड देन आफ्टर दैट सिंपली चेक एंड सेव। देन हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट बेंच बनाएंगे, एक नई फाइल बनाएंगे, उसमें टेस्ट बेंच पहले, इससे पहले सिंबल क्रिएट करेंगे, राइट। फ्रॉम दिस क्रिएट सेलव्यू, फ्रॉम सेलव्यू, एंड यहाँ पे हम सिंबल बनाते हैं जैसे ओके करके। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए मैं दोबारा नहीं करूँगा। सो यहाँ पे ये सिंबल बन के आ जाएगा। देन आई एम कनेक्टेड द सोर्सेज। ठीक है, तो स्कीमेटिक्स हम सिंबल जाएंगे एंड देन विल कनेक्ट द सोर्सेज। नाउ यहाँ पे मैंने वी बी वन को कितना दिया, 1.21 वोल्ट। अगेन ये सब चीज़ें कैसे आती है, डिज़ाइन से आपको ये सब पता लगता है, जो कि हमने बहुत ही डिटेल में बहुत सारे वीडियोस में सेम चीज़ रिपीटेडली करते हैं। जो भी पुराने लास्ट के 5-6 वीडियोस है उनमें हमने यही किया हुआ है, राइट। सो ये वी बी वन आपका 1.21 वोल्ट आ जाता है, एंड दिस ए सी सोर्स विच इज़ वी इन, उसका वी डी सी कितना आता है, 590 मिली वोल्ट्स, एंड ए सी मैग्नीट्यूड 1 वोल्ट, एंड सेम एम्पलीट्यूड 1 मिली वोल्ट, 1 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रखा है मैंने। एंड देन अगेन वी डी डी 1.8 वोल्ट ग्राउंड आउटपुट यहाँ से। तो नाउ विल डू द एसी एनालिसिस। तो इसे हम कहेंगे प्री लेआउट सिमुलेशन। तो लेआउट से पहले जो हम सिमुलेशन कर रहे हैं, एंड हम लोग गेन कैलकुलेट करेंगे। सो दिस विल बी कॉल्ड एज प्री लेआउट। सो 1 से 10 गीगाहर्ट्ज तक मैं रन करूंगा, एंड आई विल टेक द आउटपुट आल्सो फ्रॉम दिस, राइट। सो विल जस्ट रन इट, एंड हम लोग नॉर्मली जैसे गेन कैलकुलेट करते आए अभी तक के वीडियोस में, वैसे ही हम लोग नॉर्मली यहाँ तक सब प्रोसीजर सेम है। उसके बाद हम लोग लेआउट करेंगे, एंड देन लेआउट करने के बाद अगेन दोबारा हम लोग गेन कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। सो दिस इज इट। यहाँ पे हमारा ये, इसको हम डिपेंडेंट मॉडिफायर एंड देन db20, दैट इज dB स्केल में देखेंगे। सो अराउंड 9 dB का यहाँ पे गेन आ रहा है। ठीक है। सो यू कैन नोट डाउन दिस वैल्यू, 9.06 dB का वैल्यू आ रहा है। सो नाउ सिंपली एग्जिट एग्जिट सब बंद कर सकते हैं। अब हम लेआउट करेंगे स्टार्ट, राइट। लेआउट के लिए अगेन विल गो बैक टू आवर स्कीमेटिक, राइट। सो स्कीमेटिक में जाके लॉन्च लेआउट एक्सेल। सो विल क्रिएट न्यू। So yeah, now we'll press F. We'll go to connectivity, generate all from source. Simply press OK. तो सबसे पहले PR बाउंड्री को डिलीट कर देता हूँ। Then I'll just push this, ये जो मेरा ये है इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा, PMOS. Okay, enough. Yeah, I'll just push this. Now सबसे पहले मैं इसके VDD को कनेक्ट करता हूँ। Where is VDD पिन? पहले सबसे पहले VDD पिन के लिए देखेंगे। Where is it? ये रहा। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा बट इट्स फाइन। So just take it up, yeah, like this, and then we'll connect this VDD. So VDD is which one? This source, right? Source is VDD, so we'll connect this source. So P and go up, and yeah, here I've simply put this metal इसके अंदर। Okay, now this VDD has been done. Now what we can do is we can connect ground, right? Ground is again here, this source is there, this source को will connect to ground. Okay, so this is your ground here, this is your ground, right? So we can just go up, and now just put it inside this, and यहाँ पे metal to, what is this, P substrate, right? So we'll just do it like this,
The metal to P substrate is done. And then what you can do is हम लोग अब V in को connect करेंगे. This VV1 is this, V in भी होगा यहाँ पे, okay. So just go like this, click F, do like this, do like this, and you can again go a bit more here. We don't want to use more of poly, so यहाँ पे P when you do, simply go up, simply do like this, you can see, enough. So now simply put this pin and go inside this, okay. You can try to थोड़ा सा इसको balance, and now metal to poly, right. So we'll put a metal to poly here, okay. This is done. V in is done. Similarly for VB1, right. This is for VB1. Again we'll press P. Here is our poly. Here we'll go like this. Simple. We can put it inside. We'll press O, metal to poly again. So simply just do it like this. Yeah. Now this is done. Again I have so much space in between, so I can just select all and go a little bit down, right, because I don't need that much space. Now we can connect these output terminals, that is drain of both the MOSFETs. So what you can do is P, go to this, connect it here, okay. Just a second, go like this, press enter, and then you can simply get P and then go there, right. Now this extra part you can press S and do stretch करके इसको छोटा. So this is your output. Now simply get this output terminal. This is your output. Yeah, get it here somewhere and put it in this. Yeah, this is done. Now what you can do is you can put an anvil, right. So here is my anvil. You can press R. You can, again, you don't need this much of metal. Why? We'll simply get, so you can just reduce it, right. You can do it like this, and then you put this inside, and then okay, we need a metal to anvil here, right. So we haven't drawn anvil, but we'll draw, but still we need metal to anvil, right. So we can just put metal to anvil. Yeah. Now we can press R and anvil is selected here. So we can just draw an anvil. So here is our anvil. Yeah. So this is our anvil. Now what you can do is, see, if I just first run DRC, I'll get some error. We'll see. First check out. Yeah, see, it's showing me that P plus SD, that is for P type substrate anvil tap should be there. So because this is of the length is the width of this PMOS is quite huge, so I need more of this metal to this contact. So what I'll do is I'll press P here. I'll do like this, and I'll run through the length of this, the width of this, somewhere here. Press enter, and then simply press some, get some contacts. It is metal to anvil, okay. Fix this firmly, right. So press, we will get some 3 more, one at the here, okay. Simply for this also, for ground also. So what we can do is मैं simply यहाँ पे एक और ऐसे लूँगा, and यहाँ पे metal to P sub, okay, metal to P sub I'll get, and here I can do it. Now let us see the errors. Run DRC. Yeah, no DRC. We can do now run LVS. LVS takes some time. So if we get this, we are good to go. Yeah. So no DRC, no LVS. So we can do yes.
it will show me schematic and symbol is matching, right? As you can see here, schematic and layout match. Now after this, what you have to do is you have to do AV extracted, right? So layout to complete ho gaya. For AV extracted, go to QRC, just go to extraction, choose this as RC and reference node as ground. Simply do enter, yes, and it will generate an AV extracted file. And once you get the AV extracted, now we can do post layout simulation, right? So AV extracted is done. Again, you can see it from where. So simply file open, CMS amplifier. See, now we can see AV extracted. You can just press yes. So this is your AV extracted. Okay. Again, now what you have to do is you can now do the post layout simulation. You can go to this. We'll go new cell wave. CS test bench was there. So instead of we'll create a configuration file. So config. So now here what you will do is use template. Then go to spectre. Okay. In view, change view to schematic and simply press OK. So go to tree view. Go to this. Now here there is an AV extracted. So you can see this also. Open. And now you will get this. So if you double click on this, you will get the AV extracted. See, you are getting the AV extracted. Okay, you are getting the AV extracted. Okay, I should have done it in new tab, no worries. So we'll again open it. Open. So now again from this you can do the post layout simulation. So launch ADL, same वही चीज, right? AC को select करके frequency को will vary from 1 से 10. Last time कुछ 9 dB आया था, 9.06. Let us see now. Output में we'll select our output. Just run. So it will be more or less the same. Okay. So our layout is done. Our post layout simulation. Okay. So one more thing is what I have observed in most of the tools. यहाँ पे when you finish doing layout, it doesn't simply do your normal simulation. तो ये कुछ एरर दे, जैसे यहाँ पे देखो 140 एरर दे रहा है. सो व्हाट आई डू यूजुअली, आई क्लोज एवरीथिंग एंड अगेन आई रीओपन द टर्मिनल. ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया. आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन ऐसा क्यों होता है. सो यू जस्ट सिंपली क्लोज एवरीथिंग एंड देन अगेन कम बैक एंड डू द पोस्ट लेआउट सिमुलेशन. सो विल जस्ट क्लोज वन बाय वन एवरीथिंग. सो आई वांट टू शो यू स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए. अदरवाइज आई कुड जस्ट स्किप दिस, बट so let me just I just close everything and now I'll do it again. Yeah, now what, I can go file and there is my this configuration file. I can just open. Yeah, so open. It has created launch ADL. So again analysis AC 1 से 10 gigahertz will do and output, right? So now you see it runs. See, यही मैं कह रहा था कि sometimes after doing the layout it doesn't work. I don't know क्या रीज़न है. मेरे टूल में ऐसा कुछ है या कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है. बट ऐसे ही सिर्फ मैंने अपने लैपटॉप में नहीं, मैंने कॉलेज के लैब के डेस्कटॉप में भी ऐसा देखा है. सो अगेन इट्स मोर, लास्ट इट वाज 9.6, अभी 9.09 dB है. दैट्स इट. दिस इज योर प्री पोस्ट लेआउट का रिजल्ट एंड दैट वाज बिफोर प्री लेआउट सिमुलेशन एंड लेआउट इज आल्सो कंप्लीटेड. So if you want to see the layout again, simply we can go here and open layout. So this is your layout, right? Yeah, this is your layout. So this is what we had done. Pretty simple. So that's it for the video. Thank you guys for watching the video. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना and I'll see you the next time.